केमिस्ट्री द पॉजिटिव शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीछे देख रही तस्वीर से आपको अंदाजा आ गया होगा कि आज कौन से विषय पर चर्चा होने वाली है। भारत की सफलता और समृद्धि में एक और नई सफलता 2008 में मिली। आज इस पर बात करेंगे कि कैसे भारत का परचम चंद्र की सतह पर लहराया गया और यह देखेंगे कि 22 अक्टूबर 2008 को भारत की धरती से एक यान सफलता से लॉन्च हुआ और वो था चंद्रयान 1। तो कैसे प्लान तैयार हुआ, कैसे लॉन्च किया गया, तकनीकी क्या रही होगी और आखिर में कौन सी उपलब्धियां मिली, वह सभी देखने वाले हैं। 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. First time the scientists have launched with so many complex technologies they have used and they succeeded. That is historical according to me. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस के उनके भाषण में चंद्रयान 1 परियोजना की घोषणा की थी। चंद्रमा के लिए एक भारतीय वैज्ञानिक मिशन का विचार पहली बार 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी की बैठक के दौरान उठाया गया था। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने सन 2000 में इस विचार को आगे बढ़ाया था। इसके तुरंत बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स की स्थापना की, जिसने निष्कर्ष निकाला कि इसरो के पास भारतीय मिशन को अंजाम देने की तकनीकी विशेषज्ञता है और चंद्रमा पर भारतीय जांच शुरू करने के लिए टास्क फोर्स की सिफारिश को मंजूरी दी गई। 6 महीने बाद नवंबर में भारत सरकार ने भी मिशन के लिए मंजूरी दे दी थी। चंद्रयान 1 जिसका संचालक यानी कि ऑपरेटर था इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के द्वारा चंद्रयान अनुरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रमा की सतह पर जाने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा था। तमिलनाडु के नजदीक और आंध्र प्रदेश की सीमा में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C11 की सहायता से सफलतापूर्वक चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, जहां प्रक्षेपण केंद्र से मौजूद वैज्ञानिकों ने सफल प्रक्षेपण का तालियां बजाकर जोरदार स्वागत भी किया था। भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने देश का नाम रोशन किया है। इसरो के अध्यक्ष श्री माधवन नायर ने प्रक्षेपण के कुछ मिनट बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि After travel of nearly 400,000 kilometers to achieve such a precision, perhaps it's a sort of a world record. And the anxiety before the event and the type of happiness what we have enjoyed after the event was tremendous. All our hard work had paid dividends in that day. And once we say that we could receive the first signal from Chandrayaan on day, on dot, at the set time from our facility was something wonderful for me. We have collected a large amount of imageries from the moon, and the information that has been brought in, it takes easily more than 10 years to have even a quick look at it. We have already established the right type of credentials through the Chandrayaan and the other type of mission that today the international community is certainly looking forward to collaborating with India in major the undertakings in the context of space exploration. उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए इस अभियान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को इस सफलता पर बधाई भी दी है।
इसरो के अनुसार चंद्रयान के साथ 11 अन्य उपकरण अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, जिनमें से 5 भारत के ही है और 6 उपकरणों अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया से थे। Isro Satellite Center, ISAC, ISRO's lead center for developing spacecraft technology, has designed and developed. Of the 11 payloads, 5 are indigenously developed in India. Terrain Mapping Camera, TMC, and Hyperspectral Imager, HiSci, developed by Space Application Center, ISRO, Ahmedabad. High Energy X-ray Spectrometer, HEX, developed by Physical Research Laboratory, Ahmedabad, and ISRO Satellite Center, ISAC, ISRO, Bangalore. Lunar Laser Ranging Instrument, LLRI, developed by Laboratory for Electro-Optic Systems, LEOS, ISRO, Bangalore. Moon Impact Probe, MIP, developed by Vikram Sarabhai Space Center, ISRO, Thiruvananthapuram. The ESA payloads on board Chandrayaan-1 are Chandrayaan-1 Imaging X-ray Spectrometer, 6, is jointly built by Rutherford Appleton Laboratory, UK, and ISRO Satellite Center, ISRO. Smart Near-Infrared Spectrometer, SIR-2, is developed by Max Planck Institute for Solar System Science, Germany. Sub-kilovolt Atom Reflecting Analyzer, SARA, is a collaborative venture between Swedish Institute of Space Physics, Sweden, and Space Physics Laboratory, Vikram Sarabhai Space Center, ISRO. NASA-facilitated payloads are Mini Synthetic Aperture Radar, Mini-SAR, from Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University. Moon Mineralogy Mapper, M3, from Brown University, and Jet Propulsion Laboratory. Radiation Dose Monitor, RADOM, is the 6th payload from abroad being accommodated on Chandrayaan-1. चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे और पानी के अनुसार हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान 1 का कार्यकाल लगभग 2 साल का होना था, मगर नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने के कारण इसे उससे पहले ही बंद कर दिया गया था। चंद्रयान के साथ भारत चांद को यान भेजने वाला छठा देश बन गया था और इससे आगे जाने से पहले हम चंद्रयान 1 का फिजिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Chandrayaan-1 spacecraft is cuboid in shape, of approximately 1.5 meter size, weighing about 1,400 kilograms at launch, and will have a mass of 590 kilograms in lunar orbit. A 3-axis stabilized spacecraft, its orientation control and high stability is ensured by its electronic brain, with the help of sun and star sensors, gyros, reaction wheels and propulsion system. Chandrayaan-1 spacecraft propulsion system uses monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen as the oxidizer. Liquid apogee motor and thrusters are an essential part of the system. A single canted solar panel will generate a maximum of 700 watts of electrical power. During the eclipse period, the spacecraft will be powered by lithium-ion battery. चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे, पर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय लग गया था। अब हम 22 अक्टूबर 2008 से लेकर के 24 नवंबर 2008 तक का घटनाक्रम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन कटते गए वैसे वैसे चंद्रयान कैसे चांद तक पहुंचा था। 22 अक्टूबर 2008 बुधवार को 6:21 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 1 को छोड़ा गया। उल्टी गिनती सोमवार सुबह 4 बजे ही शुरू हो गई थी। 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3.
PSLV XL will inject Chandrayaan-1 into an elliptical transfer orbit ETO. ETO measuring 250 kilometers perigee and 22,000 kilometers apogee. PSLV will inject the Chandrayaan into this orbit at a velocity of 9.89 kilometers per second. From here on, all the post-launch operations will be coordinated by Isro Telemetry, Tracking and Command Network, ISTRAC, Bangalore. The existing network of ISTRAC ground stations, along with support from foreign agencies, will track and communicate with Chandrayaan-1 during its journey towards the Moon. The orbital period of the spacecraft in ETO-1 is 6.5 hours. The spacecraft circles the Earth for 3 to 4 times in the same orbit. The LAM is fired near perigee, which increases the apogee to 40,000 kilometers and enables Chandrayaan-1 to go into the second extended transfer orbit ETO-2. The orbital period of the spacecraft increases to 18 hours. After the second LAM firing, Chandrayaan-1 will go to the third extended transfer orbit ETO-3, increasing the apogee to 70,000 kilometers. The orbital period will be 24 hours. Chandrayaan-1 will be put into an elliptical orbit where the apogee will match with the distance of Moon from Earth. Satellite will take 11 days to complete one revolution in this orbit. During subsequent revolution, a trajectory correction for approach to Moon. As Chandrayaan-1 spacecraft travels into deep space, mid-course corrections will be carried out as and when required. When the spacecraft is about 500 kilometers from the lunar surface, a major maneuver called Lunar Orbit Insertion (LOI) is performed. Chandrayaan-1 will achieve its final Moon orbit 20 days after the launch. After this, Chandrayaan-1 will enter into an elliptical orbit around the Moon, with the nearest point being about 500 kilometers from the lunar surface, and farthest point being about 5,000 kilometers. After the subsequent health checks, the spacecraft's orbital height is planned to be lowered through a series of planned maneuvers to achieve the target altitude of 100-kilometer circular polar orbit over the surface of the Moon. शायद चंद्रयान 1 की सबसे महत्वपूर्ण खोज चंद्रमा पर पानी के सवाल के साथ जुड़ी थी। चंद्रमा की सतह पर जो खनिज मौजूद है उसकी जानकारी M3 यानी कि मून मिनरोलॉजी मैपर से पता चला है। लोहे की उपस्थिति का भी अंदाजा लगाया गया और चंद्र की चट्टानें और सतह पर मौजूद खनिजों में संरचना में परिवर्तन की पहचान भी की गई है। चंद्रयान 1 से चंद्र के सतह की यानी कि मून सरफेस की 70,000 पिक्चर्स को प्राप्त किया गया है। एक्सरे फ्लोरेसेंस फिनोमिनन से C1XS एक्सरे कैमरा द्वारा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की एक्सरे सिग्नेचर भी प्राप्त हुई है। हमने पहले ही बात की कि चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी सफलता थी। पर अब थोड़ा केमिकल नेचर से देखते हैं कि कैसे पानी और हाइड्रोक्सिल अणु का निर्माण होता होगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA के विशेषज्ञ ने बताया है कि सोलर विंड जब ल्यूनार रिगोलिथ यानी कि मून के सरफेस पर पाया जाने वाला इरेगुलर डस्ट उसकी इंटरेक्शन जब सोलर विंड के साथ होती है तब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब होता है और इसी डस्ट और हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन होता है और उसी टकराव से हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयन और पानी का प्रोडक्शन होता है। चंद्रयान 1 के साथ अंतिम संपर्क 28 अगस्त 2009 को हुआ था
हालांकि इसरो ने नोट किया कि ये मिशन के उद्देश्य का कम से कम 95% ऑफ द वर्क पूरा हो चुका था। रविवार 30 अगस्त 2009 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान प्रथम औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। चंद्रयान 1 की सफलता का आज हमने विश्लेषण किया है। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे नई वीडियो आपको मिलती रहे। 2019 में चंद्रयान 2 नई उम्मीदों के साथ लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 और 2 के बीच क्या अंतर रहा है वो हम भविष्य में जानेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।